And you can see the screen as well. Okay, we are going to start the lecture. Let me just record it. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Class, your next assignment is to develop a framing plan. Framing plan is the first drawing of a set of structure drawings, and I have shared this file with you. One of the way or one of the approach of drawing a framing plan is already shared with you with a Zoom lecture. Now we are going to see a different approach today. It would start from the very same architectural plans. You have to just take out the walls from the ground floor plan and take out walls from the first floor plan, right? The second thing that you have to do is that you should uh, change the color of the ground floor walls, and you should select a different color for the first floor walls. Now, one of the approach of overlapping is already discussed. The second approach is is that you have to only see the ground floor plan and you have to decide the beams. Rather, I should say that only one of the approach is not used. Both of the approaches are used. You cannot make a framing plan by using only overlapping. Okay. Rather, the first step would be that before overlapping, you should see the ground floor. Okay. And you should provide beams for the ground floor. Then you should overlap the first floor plan and you should see which walls are not on the ground floor walls and provide beams for that. Okay. Sometimes if there is a little offset, what we do is we can simply move the beam from the ground floor, right? So I'm going to show you what is the second post. If you see this back side of the house, you would find that these walls are 9 inches wide. They are load carrying walls, right? But over here, this longer wall is 4.5 inches wide. So for this wall, on this wall, we cannot provide load of the slab. So at this location, we need a beam, right? So simply I would place a beam over here, right? Now, if you see this wall, again, this is 4.5, and it would mean that our slab panel would be this much large from from here to here, which is not a good option, right? This is a huge slab panel. We have to reduce the slab panels. So again, this is to be reduced into half, like this. Now I have placed or extended this beam to this end wall because this is a load carrying wall and this is not a load carrying wall, right? On this side, this beam is resting over this beam. So this particular beam is on the left side, it is resting over this wall. On the right side, it is resting over this beam, right? And this longer beam is resting on the walls and on both of the sides. Then if we come to the front side,
you can see a large opening over here. So we need a beam over here like this, right? And if we see this area over here, we have uh, stairs, and you know you have already drawn or gone through the drawing of staircase drawing. You know that the area for stair in the area of stairs you do not provide slab. So what you do, you leave a void over here. In order to leave a void, you should know what is the size of the void. Size of the void would be taken from here. Look, your slab would be up to this point from where the stairs are connecting the slab. Okay, so it means that this is going to be the opening, right? Although we can cover this space with the help of slab, but this would be the shape of the opening. It means that your beam is going to run like this. So I'm going to pick this box from the first floor, move command. I am picking it from this corner and I'm placing it over here, right? So this box would tell you that your beam is to be placed over here. Now see, I'm going to place a beam like this. Okay. And I'm going to cross this space and I will tell that this is a stair opening, right? Now, what about this area? If you see the slab of the kitchen, on the outer side, it has a wall, inner side, it has a beam, this side again a beam, but this side is not having any support. So on this side, you again need a support. Okay. So we have provided, if we see the slab panels, look, this is a slab panel, this is a slab panel. We can provide small beams over here simply to close the slab panels. Okay. So this would be a slab panel, this would be a slab panel, this hole would be a slab panel, this hole would be a slab panel. Then uh, then this lounge would be a slab panel, this kitchen would be a slab panel, there would be a stair wide opening over here, and there would be a drawing room slab panel over here. Now we are left with this porch. If you would see this car porch, on this side we have a wall, on this side again a wall, but two sides are open, this side and this side. So you are going to provide beams like this and another beam over here and another beam over here just to close the slab boundary, right? So three beams over here, this frontal one, this one, and this one. What about this part of the slab? This part of the slab would be cantilevered from this slab, right? Similarly, you would do the framing of the first floor. In first floor, if you have roof over first floor, what do we have to see? Uh, at this very basic level, you can only consider
that if you are having 4.5 inches wide walls, do not put load over 4.5 inches wide wall. So that is the minimum that you can do at this initial level. But in actual, what we have to do, we have to also consider the ground floor. We have to also consider that at which location we are putting load on the ground floor while deciding the beams of the first floor. But you do not need to consider that, only see the conditions of the first floor and provide beams. Look, you have a 4.5 inches wide wall over here. So place a beam again in this direction, place a beam, right? Uh, okay. Then similarly, as we have done in the ground floor, to make slab panels, place a beam, and we need a beam over here for stairs going on the multi floor. We need a beam over. Look, a beam may be provided over here or may not be provided over here, because this hole would be a slab panel. This hole would be a slab panel. This hole would be a slab panel, right? So this is one slab panel. This is second slab panel. This would be a smaller part of the slab. This would be another slab panel. This would be another slab panel. And this is a slab panel. This is a slab panel, right? And maybe for the elevation features, you have to provide a beam or a lintel over here. One thing to one thing I forgot is that when you are going to make a framing plan, in framing plan you show the beams which comes with the slab. Okay. In a separate plan, you can show the lintels. Now, what is the difference between lintels and beams? Lintels are at uh, uh, door top or window top, right? They are not casted with the slab. Slab, the beams which comes with the slab are categorized as beams, and the beams which are placed at a lower level at the top of the window or the door are known as lintels. You can make separate plans for lintels. Over here we have a window, over here we have a window, over here we have a door. So you can, maybe you can provide a continuous lintel from here to here, and then a lintel from for this window, a lintel for this window, a lintel for this window, a lintel for this opening. Okay. Now, one thing, one another question from one. There was a one question from other class, that what should be the supporting length of between the beam and the supporting member. Look, this is the beam and this is the wall is the supporting member. This distance, which is the contact distance between beam and the supporting member, is known as, I'll show a line. This distance is known as
bearing length, right? This is known as, this distance is known as bearing length. And minimum it should be 3 inches or 4.5 inches, 3 inches in the case when there is a concrete connection with concrete connection. Like a concrete beam is supported over a concrete column, provided that there isn't much load from the beam. If the load is greater, then at least you should provide a bearing of 6 inches, okay? Or preferably whatever is the dimension of the supporting member. So in masonry structures, if the in case of lintels there are lesser load, your bearing length can be 4.5 inches. But for beams which are carrying the load, minimum bearing length should be preferably 9 inches. Okay, 9 inches is the preferred one. And bearing length is this distance connection between beam and the supporting member. Minimum it should be 3 inches or 4.5 inches when 3 inches in case of concrete. When the concrete connection is with concrete supporting member, 4.5 inches when a concrete connection with a masonry wall. Okay, and this again this can be the case when the load is very less, like in case of lintels or maybe parapet walls. But for beams, minimum 6 inches, preferably equal to the width of the supporting member. Either it is 9 inches or 13.5 inches or 12 inches, whatever, right? So you are once you draw the once you take out the walls, may keep a separate copy for that. Show lintels in a different plan, show beams in a different plan, give names to the beam. Okay, framing plan is shown over here. Give names to the beam. In this particular framing plan, lintels and beams are shown in the same plan, but preferred way is that you should show lintels in different plan and beams in the framing plan, right? And instead of this, these stairs, you can show a cross that this is a slab opening, this is slab wide, right? One more thing is that look, the outer line of the slab is solid and all the inner lines are dashed. Look, for this wall, both of the lines are dashed. This comes from the idea of uh, top view, okay? Because on the outer side is the periphery of the slab, so this would be solid line, and these walls would be basically underneath the slab, so they are shown with dashed lines, right? Why beams are shown with solid line? Why the outline of beam is shown with solid line? Because beams are coming with the slab, concrete slab. That's why they are shown with solid line. Then we had a discussion. Maybe you've gone through the Zoom recording that I've sent in your group.
that beams can be drop beams, they can be concealed beams, they can be inverted beams. At this level, you only need to show drop beams, no need to provide uh, concealed beams or inverted beams, right? Now, if you have any questions, let me stop the recording, pause recording. जी बच्चों, if you have any question, you can ask or you can raise your hand. I have allowed all of you to unmute yourselves, but do unmute one by one and ask questions if you like to speak. There is a question from, wait, there is a question from what type of foundation should be provided across the wall, single-sided foundation or double-sided foundation? Roll number 67, the answer to your question is if your wall or the column is at the property limit, the foundation would be one-sided and it would be inside your property. And if your foundation, if your wall or the column is inside your property it is not on the property limit, then it is going to be having a double-sided foundation and a symmetric one. The question of roll number 90 is what is the difference between concealed beams and inverted beams? Okay, I will tell you 90. Next 67. अच्छा ये किसी का माइक ऑन हो गया है? Check your mics. नाइन्टी सिक्स का माइक ऑन हुआ था, बंद हो गया. बच्चे 67, send the screenshot in the group, please. 103 is asking, sir, when a single wall ends, then at the edge we have to provide foundation along with. Okay, answer to roll number 90 is what will be appropriate height and width of the beam? Width of the beam is basically equal to the width of the member it is supporting. If it isn't supporting any member, you can provide a width of 9 inches. 9 inches is the most common width of beam. What about the drop? Drop you can take a drop of 9 inches is fine. But basically, when you would go to the design classes, you would know that the size of the beam is decided first of all based on some empirical formulas and your personal experiences, and accordingly the reinforcement is calculated, right? So you can take 9 inches width and 9 inches drop. 9 inches drop would mean that the total height of the beam would be 9 inches plus the slab thickness. Okay, 103, I do not understand your question. Can you tell me what you're saying? सर वो जी ना बच्चे.
ग्रुप में उसने हमजा ने तस्वीर सेंड की है, उसमें उसने शो किया है, वो क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूँ। क्या क्या किया? एक मिनट ठहरे, मैं देखूं। अ, ये मुझे समझ नहीं है, ये क्या क्या भेजा आपने? 103। सर वो ग्रुप में मैंने नहीं, किसी और लड़के ने पिक्चर सेंड की है, जो हमारा सिविल हाँ, वो इंजीनियरिंग का मैंने सेक्शन। देखा है, लेकिन ये क्या है? ये वो क्या आप जिधर एरो एरो फाउंडेशन? पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, मतलब वाल के नेक्स्ट आगे भी फाउंडेशन बनाएंगे या वाल की लेंथ तक उसे खत्म कर देंगे? हाँ हाँ, अच्छा, ये यू आर टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन ना? यस सर, एंड एक्सकवेशन। हाँ, ये आगे भी जाएगी बच्चे, ये आगे भी जाएगी, उतनी ऑफसेट आगे भी जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि दिस वुड बी सिमिलर टू, देखिए जी, दिस वुड बी सिमिलर टू कॉलम। कॉलम अगर आपका मेसनरी कॉलम होगा तो उसकी फाउंडेशन ऑल अराउंड होगी ना। तो इसी तरह ये भी, ये इसके स्टेप्स आगे वाली साइड पे भी जाएंगे, ये यहाँ पे वॉल फेस पे खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है। और इफ आई सी दिस सिचुएशन, मे बी देयर इज द केस कि यहाँ पे कोई ऊपर बड़ी ओपनिंग हो। ठीक है। तो 103 हैज रेज हैंड। देखें, जो आपकी आपकी एक मिनट, आपकी जो फाउंडेशन आपने अभी जो पिक्चर शेयर की स्क्रीनशॉट, मुझे ये देख के लगता है कि ऊपर मैप में कोई बड़ी ओपनिंग होगी। ठीक है। तो आपके लेवल पे ठीक है कि आप फाउंडेशन यहाँ पे ख़त्म कर दें, बट वी हैव टू सी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। मे बी मैं इस फाउंडेशन को फ्लोर लेवल तक दूसरे एंड तक कंटिन्यू कर दूं, टू टेक और टू सपोर्ट दी फ्लोरिंग लोड। ठीक है जी, राइट। तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन स्टेप्स आगे जाएंगे उसके वॉल के। अच्छा, देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने अनम्यूट किया था। सिंगल के आगे ज़्यादा होती है, ये बात नहीं मुझे समझ आई बच्चे, दोबारा बोलें, क्या कह रहे हैं? आग, आगे जैसे आप अलोंग द विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऐसे ही अलोंग द लेंथ प्रोवाइड करेंगे जब वॉल खत्म हो रही है। ठीक है। डबल साइडेड से फिर मुझे क्योंकि वो तो एक सिंगल साइड ही है ना, उसकी दूसरी साइड तो प्रॉपर्टी लिमिट है, जो मुझे मैं आपके फिगर से नजर आता है, उस साइड पे नहीं निकल सकते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप यू आर सेइंग कि द फाउंडेशन व्हिच इज एट द प्रॉपर्टी लिमिट, वो सिंगल साइडेड होती है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। बच्चे, उसकी टोटल विड्थ उतनी ही होती है जितनी डबल साइडेड की होती है। लेट से अगर 22.5 इंचेस सिमेट्रिक फाउंडेशन या डबल साइडेड फाउंडेशन की विड्थ है, तो सिंगल साइडेड भी अगर सेम वॉल है तो उसकी 22.5 इंचेस ही विड्थ होगी, लेकिन वो एक साइड पे होगी। वो सिंगल साइडेड है ना, वो प्रॉपर्टी लिमिट पे है। ठीक है। वो जो डबल साइड पे हमारा निकलता है 4.5 का हाफ, मतलब 2.25, वो सिंगल साइडेड में 4.5 हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही साइड पे निकलेगा। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, देर आर क्वेश्चंस। सर, स्लैब की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि बीम प्रोवाइड करना लाजमी हो? 98।
स्लैब की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि बीम प्रोवाइड करना लाजमी हो? रोल नंबर 98, मुझे नहीं इस बात की समझ आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। 98, can you raise your hand? '98. Roll number 98, I do not get your question that what should be the length of slab in order to provide a beam. Look, basically, the slab load has to go somewhere. It should have supports around it. Now, if you are having nothing on one side or two sides, then you should provide beams on those sides, right? In order to carry the load. Maybe what you were asking is that if for bigger panels of slabs, can we divide it into two panels to economize the slab? Yes, we can do. Maybe that was your question, but to give you an example, I can tell you that let's say consider any slab panel of our classroom, of our drawing hall. It has longer uh, slab panels, right? Now you may say that in the whole classroom it has walls all around, so you can have a bigger slab panel. But this much big slab panel would be too much heavy, so that's why beams are provided, right? Save your questions for the next session because the session is going to end. Send you link. In the last session, there was a question that what is the difference between drop beam, inverted beam, and concealed beam? To answer this, I'm going to show you a drawing. Can you see AutoCAD screen? Now, this type of beam is a drop beam. This beam is a drop beam. Okay. This is the slab. The beam is hanging down from the slab. So this is known as a drop beam or a hanging beam. And what is drop? This much distance this is the drop of the beam, right? Right. Uh, as this file is copied from another file, so there may be some problem in the dimensioning, but this is the drop of the beam. This distance is the drop, right? The hanging part. Then this type of beam, opposite of drop, the hanging part is taken on the upper side. This is known as an inverted beam. This is the slab, and this is the inverted beam. In load carrying capacity, if you compare the dimensions and the reinforcement, if a hanging beam and you compare hanging beam with an inverted beam, they are equal. Okay, so drop can be provided on the lower side as well as on the upper side. If it is provided on the upper side, it is known as an
inverted beam. Although the use of this type of beam is lesser because it obstructs the passage. This is third type of beam, which is extending either 3 inches or 4 inches above the slab. And this would be covered in the flooring afterwards. This type of beam is known as a concealed beam. Concealed beam is concealed means hidden, right? So it won't be underneath from the lower side. It won't be seen from the upper side. It would be covered in the flooring. So these are three types of beams. At this level, you can only provide inverted beams, these ones, right? Now, class, you can unmute yourself if you have any questions, or you can raise your hand, or you can write down your questions in the chat. Last 2 or 3 questions I could not answer in the previous session. Ask your questions again. One of the questions is answered, that what is the difference between inverted, concealed, and drop beam? जी बच्चे सर हमारा जी अगर कॉलम जो है उसके वो कॉर्नर पे आ रहा है कि उसकी दोनों साइड्स पे हमारी बाउंड्री लिमिट्स हैं, जिस तरह हमारे मेन गेट के कॉर्नर पे आ रहा है तो उसकी फिर मतलब दो दोनों साइड साइड्स पे पे नहीं, फाउंडेशन, हाँ दोनों उसकी साइड मतलब पे नहीं प्रॉपर्टी के है। अंदर, लेकिन सर उसकी वो जो फिर हमारी डायमेंशन है नीचे हमारे पैड की वो सेम ही रहेंगी, वो सेम रहेंगे बच्चे। सिर्फ वो जो 4 इंच का ऑफसेट है वो उन साइड्स पे नहीं जाएगा जिस साइड्स पे हमारी बाउंड्री लिमिट्स हैं। जी ऐसे ही है। अच्छा उज़ैर, I should add in this in that type of column, if that column is in the boundary wall, you are having lesser load on that. ठीक है, तो उसमें इशू कोई नहीं आएगा। ठीक है, इफ यू थिंक कि उसकी फाउंडेशन बिल्कुल ही एक साइड पे चले जाएगी तो इशू उसमें कोई भी नहीं आएगा। But if you are talking about bigger structures like a commercial building which has 3 or 4 stories, और उसका कॉलम कोई एंड पे आता है, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ कंबाइंड फाउंडेशन। उसकी फाउंडेशन आपको किसी और जो अंदर कॉलम है उससे कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप हायर क्लासेस में डिज़ाइन क्लासेस पढ़ेंगे तो यू वुड नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंबाइंड फाउंडेशन एंड व्हाट इज आइसोलेटेड फाउंडेशन, और व्हाई डू यू कंबाइन फाउंडेशंस। ठीक है, तो उस केस में सर आप फाउंडेशंस कंबाइन करेंगे। सर हम जब ब्रिक के स्टेप की विड्थ लेते हैं वो हम दोनों साइड्स वाली विड्थ जो है वो कंबाइन कर देते हैं, लेकिन सर वो पीसीसी की हम कंबाइन कर सिर्फ देते हैं एक साइड। हाँ, पीसीसी की पीसीसी 4 ही सर क्यों एक रखते हैं, उसे 8 क्यों नहीं कर देते हम? PCC is not the part जो लीन आप डाल रहे हैं under the foundation, it is not the part of the structure, it is considered as a part of the earth। ठीक है, it is an ideal surface on which you lay your foundations। ठीक है, so it has nothing to do with load transfer। ठीक है, it does not has to carry a load, it is an ideal surface over which you are laying your foundation simply। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसलिए हम उसको 8 इंचेस वाइड नहीं करते, उसको 4 इंचेस ही रहने देते हैं। एनी क्वेश्चन? सर मेन गेट के नीचे हम रिटेनिंग वॉल दे सकते हैं बाउंड्री वॉल के इक्वल, या अगर नाम भी दें जस्ट स्लोप दे दें तो? नहीं नहीं, मेन गेट के नीचे आपकी वॉल फाउंडेशन रन करेगी। बाउंड्री वॉल अगर 4.5 है तो 4.5 की वॉल फाउंडेशन आएगी? नहीं है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, व्हेन यू गो बिलो द डीपीसी लेवल और द प्लिंथ लेवल, योर वॉल वुड बी 9 इंचेस वाइड, इट इज नॉट गोइंग टू बी 4.5 इंचेस वाइड। पर सर वो सेम एज अ बाउंड्री वाल ही मींस उसकी फाउंडेशन हो जाएगी ना, उधर भी 9 ही हमने हाँ किया तो इधर भी बिल्कुल सेम। बिल्कुल, बाउंड्री वॉल की जो फाउंडेशन होगी ना वो वहां पे कंटिन्यू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
आई गेस लास्ट सेशन में रोल नंबर 98 का कोई क्वेश्चन था, 98 रोल नंबर। सर दो वॉल्स के दरमियान कितना स्पैन होना चाहिए कि हमें यानी वहाँ पे बीम प्रोवाइड करना पड़े? अच्छा, ये मैंने आपको जवाब दिया था, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया था। देखें, मैं अगर आपको दोबारा बताऊं कि एक स्लैब की 4 साइड्स हैं, ठीक है, उसके चारों साइडों पे सपोर्ट होनी चाहिए, राइट। अगर सपोर्ट नहीं है वॉल के फॉर्म में तो आपको वहां पे बीम प्रोवाइड करना है। और फिर मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप कुछ और सोच रहे हैं कि कितना बड़ा स्लैब हो तो हम उसको डिवाइड करके छोटे पैनल्स में कर लें, तो उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारा जो ड्राइंग हॉल है, इफ यू कंसीडर आवर ड्राइंग हॉल, इट इज़ अ वेरी लार्ज हॉल, ठीक है, एंड अगर उसके स्लैब के चारों साइडों पे देखें तो यू हैव वॉल्स, सपोर्ट तो अवेलेबल है ना। So what you are doing is over there that you are dividing the slab panel into smaller panels. Why? Because आपके स्लैब का स्पैन बहुत ज़्यादा है। अगर उसके स्लैब का स्पैन बहुत ज़्यादा होगा तो स्लैब की थिकनेस बहुत ज़्यादा आएगी, उसकी रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा आएगी, उसमें सैगिंग के भी उतने चांसेस हैं। सैगिंग मीन्स यू हैव रेड व्हाट इज सैग, सैग से सैगिंग निकलता है, लटकना जिसको कहते हैं, तो उसको अनइकोनॉमिकल भी हो जाएगा। इसलिए उसको हमने बीम्स प्रोवाइड करके स्लैब की जो रीइंफोर्समेंट और थिकनेस है उसको कम, राइट। 98 समझ आइए आपको? यस सर। ठीक है, तो मैंने कहा दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ये कि यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑन सर ऑल साइड ऑफ मैक्सिमम पैनल स्लैब। की लेंथ कितनी होनी चाहिए? इट मींस कि 8 फीट और 9 फीट ईटीसी। अच्छा, आप उस फॉर्म में पूछ रहे हैं। देखें बच्चे, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, चलें मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि अगर आप इफ यू आर डिजाइनिंग स्लैब, ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम स्पैन इतना होना चाहिए कि योर स्लैब शुड नॉट हैव अ थिकनेस मोर देन 6 इंचेस। दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग दिस, कि इतना स्पैन होना चाहिए कि आपकी जो स्लैब की थिकनेस, जब आप स्लैब डिजाइन करें तो उसकी थिकनेस 6 इंचेस से ज्यादा ना आए, 6 इंचेस से कम ही हो, ठीक है। तो 6 इंचेस से कम स्लैब की थिकनेस वुड बी इकोनॉमिकल, और 6 इंचेस से ज़्यादा अगर आप स्लैब की थिकनेस देते हैं तो यू आर गोइंग ऑन अ हैवी स्लैब एंड एन अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको आंसर करना इज नॉट इजी कि आपका कितना स्पैन हो। अगर जनरली आप मेरा आइडिया पूछें तो स्पैन लेसर देन 20 फीट is fine. If your span is 20 feet or 25 feet or 30 feet, तो आपके बीम्स भी बहुत हैवी आएंगे और आपके स्लैब पैनल्स भी हैवी आएंगे, ठीक है जी। 98 कोई आपको बात समझ आई? यस सर, ओके, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जब हमारी कॉलम जो है वो वॉल के अंदर आ रहा हो तो उसकी फाउंडेशन में हमने वो कंक्रीट पैड डालना होता है, तो हम पहले पैड डाल के और उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें वॉल की फाउंडेशन ले कर देंगे, जी जी, क्योंकि यस वो यू आर ओवरलैप राइट। करेंगी ना। ओवरलैप करेंगी, पहले उसी लेवल पे जो आपके पीसीसी लेवल पे हो, पहले पैड बनेगा, पैड में से डबल बार्स निकलेंगे, फिर वॉल बनेगी, वॉल वुड बी स्टॉप्ड एट द कॉलम फेस, और साइड पे आप प्लेट्स लगा लगा के शटरिंग की और यू वुड कंक्रीट द कॉलम, राइट। पहले तो सर उसकी हमने इसमें जी फाउंडेशन उसमें रिइंफोर्समेंट डिटेल्स वगैरह भी शो करवानी है, मतलब पीछे हमने जो फाउंडेशन बनानी है या नेक्स्ट ड्राइंग जो हमने फ्रेमिंग में बीम वगैरह और ये वो डालना है, नहीं, ये ये रिइंफोर्समेंट भी। फ्रेमिंग के बाद हम रीइंफोर्समेंट डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीक, फिर आप रीइंफोर्समेंट की तरफ जाएंगे। सर मतलब अभी हम वो कॉलम्स और स्टेयर्स वगैरह में उनकी फाउंडेशन में वो नहीं स्टील वगैरह भी रहने दें।
रहने दें। ओके सर। Any other question? सर जी जब हमारी स्लैब के नीचे मतलब वॉल रन कर रही है लेकिन अंदर कोई फॉर एग्जांपल 2 to 3 फीट या बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस आई है जिसके नीचे हमारी वॉल नहीं है, तो उधर हम बीम ना भी प्रोवाइड करें तो काम चल जाएगा, यहाँ प्रोवाइड करना कंपल्सरी है, मतलब बिल्कुल छोटा स्पैन है। मतलब आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप कि अगर स्लैब आपका है और स्लैब की एक साइड पे सर वॉल रन कर फॉर रही है, एग्जांपल ये लेकिन हो सकता है कि वॉल के अंदर 2-3 फीट की ओपनिंग है, ये कह रहे हो? सर इस तरह से हो सकता है यहाँ दो वॉल्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो 2-3 फीट का, लेकिन हमने स्लैब तो ओवरऑल ऊपर प्रोवाइड करनी है, मतलब अंदर वॉल है ही नहीं, हम ये नहीं, कह सकते हैं। वो आपको उसकी देखें, स्लैब की पेरिफेरी आपको क्लोज करनी है, ठीक है? तो वो आपको बीम से क्लोज करनी है। अब वो बीम देखें, उज़ैर मैं आपको बताता हूँ, ये होता ही है कि अब वहाँ पे इतना वो 2 or 3 फीट स्पैन इज नथिंग। इवन अगर आपका स्पैन 3 फीट तक भी है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड 2 or 3 नंबर 6 बार्स, ठीक है, या 2 बार्स नंबर 6 के प्रोवाइड कर दें वहाँ पे स्लैब की रीइंफोर्समेंट के साथ ही, तो दे वुड एक्ट एज अ बीम, ठीक है? लेकिन यस पेरिफेरी सर। आपको उसको क्लोज करनी पड़ेगी स्लैब की। मतलब अगर आपको मैं स्ट्रेट इसका आंसर दूं तो बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन आपका? सर जब हमने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है तो हम नीचे ग्राउंड फ्लोर का अगर बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर की ओपनिंग जो टॉप फ्लोर की जिधर वॉल्स मैच नहीं कर रही उन दोनों के कंबाइंड बीम सारे उसमें आएंगे ना हमारे पास। जी, मैंने एक अप्रोच आपको पहले जो रिकॉर्डिंग दी थी वो थी यस सर। ओवरलैपिंग की, बट बिफोर दैट आपको क्या करना होता है? द फर्स्ट थिंग इज कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को देखें और फ्रेमिंग डिसाइड करें। सेकंड थिंग इज कि आप फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स को ओवरलैप करें, और अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर पे जो बीम्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं उसके अलावा कोई एडिशनल बीम्स आते हैं, तो आप वो फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स के लिए प्रोवाइड करें। ठीक है जी? ये सर मतलब मतलब दोनों 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 आपने अप्रोचेज यूज अप्रोचेस। करके जितने बीम्स आएंगे वो सारे प्रोवाइड करने होंगे। जी ओके बिल्कुल, सर। ऐसे ही है। एनी अदर क्वेश्चन? From roll number 73, the the foundation wall section that you had sent last week had 3 steps of sections, 3 types of sections for 4.5 inches, one for load carrying walls and two for non-load carrying walls. Roll number 73 has asked a question that the foundation that the foundation I sent last week had 3 types of sections for 4.5 inches wall. One for load carrying walls, the other two for non-load carrying walls. Look, first of all of the 4.5 inches wide masonry walls are partition walls or non-load carrying walls. So none can be a load carrying wall, right? That is the first thing. There is a
And you said that there is a depth difference there. Uh, Look, preferably the depth of foundations should be same. Maybe I'll see it again, but but those sections were picked up from different files. So maybe by mistake there was a depth difference, but preferably the depth of all of the foundations should be at the same level, right? And you said that non-load carrying walls has larger depth than the load carrying walls. No, load carrying walls has uh, can have larger depth, but preferably all of the foundations should be laid at the same level, same depth. Roll number 98 has asked stringer beam for stair where flight of stairs meets some explain. Roll number 98 stringer beam is a beam which is running along the length of the member. So any beam which is running along the length of the stairs, length of the flight of the stairs would be known as a stringer beam, right? Uh, so you are saying that to explain what? How the beam is going to be supported? 98 हम आपसे पूछ लेते हैं आप क्या कह रहे हैं 98 unmute your mic. सर फ्लाइट्स की अपर साइड और डाउन साइड पे जो बीम बनाती हैं सर उसके बारे में थोड़ा सा नहीं वो that is not a known as stringer beam 98. First of all, देखें stringer beam is a beam which is running along the length of a member. अगर आपके जो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स के जो लेंथ है उसके अलॉन्ग कोई बीम रन कर रहा है तो उसको हम स्ट्रिंगर बीम कहेंगे द बीम विच इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द स्टेयर्स ठीक है विच बेसिकली हैज टू कैरी द लोड ऑफ द स्टेयर्स नॉट नोन एज द स्ट्रिंगर बीम ठीक है दिस थिंग इज टू बी क्लियर्ड फर्स्ट अच्छा उस बीम का अगर आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे प्रोवाइड करनी है वहाँ पे आपके स्टेयर्स जाके कनेक्ट होनी है ऊपर वाले स्लैब साथ वहाँ पे आपको बीम प्रोवाइड करना है और बीम की उस बीम की लेंथ कितनी होगी इट इज़ टू बी सपोर्टेड ऑन सम स्पोर्ट्स उसकी अगर करीब है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी अगर स्पोर्ट्स उसकी लॉन्गर डिस्टेंस पे है तो बीम की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी ठीक है सर हम जिधर से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती हैं उधर जो हम वो सपोर्ट फाउंडेशन बीम वगैरह प्रोवाइड करते हैं सर उसकी मतलब थिकनेस आई थिंक शायद 9 इंच शोन थी तो उसको सर हम स्टेप के इक्वल भी रख के नीचे लेके जा सकते हैं और बाद में पैड प्रोवाइड करते हैं या फिर उसका कोई क्या सीन नहीं 103 आप मतलब क्या पूछ रहे हैं जो आप स्टेयर की सर वो फाउंडेशन पूछ रहे हैं ना स्टेयर की फाउंडेशन डिटेल वो किस तरह से मतलब हम डिसाइड करेंगे अच्छा या उसका अच्छा देखें यू हैव in your theory classes about these stair terminologies there is base slab कहते हैं उसको या बेस slab स्लैब with base slab कहते हैं ना stairs के नीचे जो slab होती है सर जिसके ऊपर स्टेप्स आते हैं हमारे जी जिसके ऊपर सर steps वो आती है वेस्ट स्लैब होती है वेस्ट स्लैब सॉरी उसको बेस स्लैब भी कहते हैं वेस्ट स्लैब तो दैट वेस्ट स्लैब इज टर्न एंड टेकन डाउन सिंपली ठीक है सर व्हेन वो इट इज टेकन एग्जैक्टली डाउन सेम थिकनेस नहीं वेस्ट स्लैब इज मे बी 4 इंचेस ठीक है 3.5 इंचेस 4 इंचेस की वेस्ट स्लैब होती है आपकी when it is turned and taken down its width is kept equal to 9 inches right और नीचे जाके एक आप पैड प्रोवाइड कर देते हैं उसका बस फाउंडेशन लेवल पे
समझ आई बच्चे आपको? यस सर। Any other question? सर नेक्स्ट ड्राइंग में हम जो कॉलम वगैरह उधर बीम वगैरह बनाएंगे उनके सेक्शन भी हमें फ्रेम ड्राइंग वाली के साथ ही शो करने होंगे, साथ अलग से। नेक्स्ट ड्राइंग जो बनाएंगे वो जो फ्रेम वाली ड्राइंग है उसमें बीम्स वगैरह और हमने वो लिंटर वगैरह प्रोवाइड करने हैं, तो उसमें उनके सेक्शन वगैरह भी बनाने हैं। हाँ वो नेक्स्ट अभी आप फ्रेमिंग प्लान बनाए ना, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके आप सेक्शन भी बनाएंगे। ओके बच्चे सर। मुझे ये बताएं कि आपको मैं किस तरह रिकॉर्डिंग भेजूं, इसका साइज बड़ा हो गया 147 MB। उजैर आपको मैं किस तरह भेजूं रिकॉर्डिंग? सर इसकी अगर ड्राइव पे अपलोड हो जाए तो उस तरह से आई थिंक आ सकती ठीक है वहां पे मैं कर देता हूँ, ड्रॉप बॉक्स में कर दूँ। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? बच्चे कोई क्वेश्चन है और आपका? प्लान में हमारी जब वो प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ वाल वो सॉलिड शो कर देते हैं, कुछ सॉलिड नहीं, या कुछ में वो मतलब हैच कर देते हैं पूरा फिल करके, और कुछ को मतलब खाली रहने देते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है कि एक सीलिंग हाइट तक जाती है और एक कम तक रह नहीं नहीं जाती है, इस तरह का? नहीं मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हैच इज नॉट द फीचर ऑफ प्लान, ठीक है? हैच इज द फीचर ऑफ सेक्शन। ये जो हैच करते हैं ये सिर्फ उसको क्या करते हैं, उसको प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट करने करने के के लिए। लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए करते हैं। एंड हैचिंग इज नॉर्मली डन इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ठीक है? यू सी ओवर हियर इन द फ्रेमिंग प्लान वी आर हैचिंग द बीम्स, ठीक है? तो बीम्स को हम प्रोमिनेंट करने के लिए हैच कर रहे हैं, उसकी और कोई रीजन नहीं है, ओके सर। ठीक है? अच्छा वो जो आप जैर पूछ रहे हैं एक और बात कि सीलिंग हाइट तक जाती है नहीं जाती, वो आपकी बात सही है कि वो जो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में जो स्ट्रक्चर की वॉल्स हैं, घर की वॉल्स हैं, उसको वो हैच कर देते हैं, बाउंड्री वॉल को हैच नहीं करते, ठीक है? यस सर। तो उनका मेन फीचर ये होता, मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू फोकस ऑन दी बिल्डिंग वॉल्स, क्योंकि अगर आपने किसी आर्किटेक्ट ने किसी क्लाइंट को अगर आर्किटेक्चरल प्लान दिखाना है तो उसका मेन फोकस तो फ्लोर प्लान है, राइट? तो बाउंड्री वॉल तो यस एक एक पेरिफेरी वॉल है ना, तो उसको वो शेड नहीं करता, अंदर वाली वॉल्स को वो शेड कर देता है, ठीक है? ड्राइंग के कंसेप्ट से प्लान में हैचिंग नहीं होती, बट प्लान्स कैन बी हैच टू मेक अ थिंग प्रोमिनेंट, ठीक है? जैसे हमने कभी फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था, ज्यादा थिकनेस प्रोवाइड करने से यू मेक थिंग्स प्रोमिनेंट, इसी तरह यू कैन हैश द ऑब्जेक्ट्स टू मेक देम प्रोमिनेंट। एनी अदर क्वेश्चन? लिंटर लेवल से नीचे काटते हैं नहीं, वो जो बाउंड्री वॉल और घर वाली वॉल्स का आप पूछ रहे हैं? हम्म, आप इसकी हैचिंग की बात कर रहे हैं? नहीं वो जो मैंने आपको बताया कि हैचिंग इज द फीचर ऑफ सेक्शन, अगर आप प्लान में हैचिंग कर रहे हैं तो इज ओनली टू मेक समथिंग प्रोमिनेंट, तो वो उसमें वो लिंटल वाला जो प्लान ड्रॉ करने वाला कॉन्सेप्ट है उसमें वो नहीं आएगा, ठीक है?
Any other question? सर हमने सेक्शन में जो फाउंडेशन बनाई हुई है और जो अभी आपने हमें सेंड की हैं कि अभी हम जो फाउंडेशन डिटेल्स बनाए इनमें सर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहले आपने सिर्फ बोला था कि 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो हमने लाइक पीसीसी की हाइट थोड़ी चेंज कर दी हुई है या 4 इंच की बजाय 6 रख दिया हुआ है इस तरह से, तो सर फिर हम कोई बात वो उस तरह ही रहने दें, अभी ये जो आपने सेंड किया ये बना दें। हाँ, वो उसी तरह है। ठीक है। Any other question? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आपका? Okay, if you do not have any other question, the class is over. I would share you the video in your groups. Thank you very much. Allah Hafiz.